They keep you there for about 15 minutes. They tell you to go home and avoid contact with that food group or particle or whatever it is for the next 24 hours. 12 meridians, 2 hours per meridian for the energy circuit to be complete. And 24 hours later when you go back, you don't have that allergy anymore. And I've done 6 allergy removals with them, and violent ones, to shellfish where I get hives on my body. Alia and Umar have been there. Alia had a massive chicken allergy. Her stomach used to pain like mad when she had it. And people who get rashes, boil, anything. 24 hours, you matched your energy. What they've done with him is the same principle, because they've taken it, injected it into his blood, brought it back into his bloodstream, trying to harmonize the thing through balancing it. It's so interesting because you realize at the end of it that the energy that flows, it has to be in complete sync with the energies of whatever surrounds you for you to have a peaceful existence. Tomorrow we'll discuss frequencies, which are things that are not blood vessels flowing through you, but energy vessels literally that are flowing out of you. Tomorrow we'll discuss that scientifically later. But it's so interesting. So these 12 meridians, 6 of them go up and 6, all the text and content which you will see in your manuals, you'll be like, my God, that's a lot of information. But at the end of the day, that information is something that you can use very constructively, especially if you're going through either a disease of some kind, where you know you're having bladder issues, kidney issues, lung issues, spleen issues, and how to go about correcting it, most importantly, because you realize where your energy blockages are at. So when you go at it from a meridian perspective, okay, you go with the lung, whether it's, there's so many issues that crop up and you just can't think clearly. I'm in a fog, I have a brain. The kidney meridian, which is known as the root of life, and the kidney is very important for your sexual functions. In a land of Kama Sutra that, believes in no holding hands and no kissing, in public. So there's a lot of shame and guilt association with sex. When he was looking at the brochure, there's one diagram there which says everything begins with the decision to try. He says, don't say decision to try, say decision to do. There's no trying. If you want to try, you always keep trying. Trying means you're setting yourself up for failure. You're accepting that there may be an element of failure. So don't initiative and all of that. That comes and is governed by the gallbladder meridian. The liver meridian, it's so funny. The other day there was this joke. This guy said, oh, my doctor said I have an enlarged liver. And said, I'm looking it's enlarged, there's more space. So, yeah. So basically these are our meridians that we've quickly gone through. I'm not going to tax your mind, yes. They're practicing NAET physicians in Bombay, Meher and Firoza. They are fabulous. I highly recommend them for anybody who has allergies, because allergies are debilitating. They work on multiple layers of our body. It's not just that you need to have a physical allergy, sometimes emotional allergies caused by emotional when you're eating corn and popping it into your mouth. So, these are things you need to be careful of. I know it sounds airy-fairy at this point, but when you then directly relate it back to a science, you realize how much knowledge and base there is behind people saying, when you are... I will give you the number. I will definitely give you the number, because that's something that I wish for everybody to be allergy-free. It's liberating to be allergy-free. Anybody else? The elements... Let's go to them and see the classifications. Especially rush to the energy meridians because we time space. How do these apply to? How do these elements apply to what you? Well, it's written there as to how to go about the elements also. So wood element, earth, nature, wood. So these the Chinese classify things as per the elements, as I said earlier. So water-based, wood-based, water, wood, metal, fire, and earth. So if there's an elemental imbalance, then those meridians are imbalanced. So when you go to like earth, water, wood, fire, sunlight, things like that, you automatically start balancing those meridians out. So there are 2 ways to basically look at it. So it helps you from this perspective and also from this perspective to
to rectify it basically. So basically we're going to move on to exactly the opening up of your meridians. So as I said, the energy flows through your body, one part not functioning, especially organs. And organs are extremely, as we know, essential to our well-being. So, how do you open up your energy meridians apart from these techniques? How do you stop them from being blocked in the first place? So, how many of you heard of EET and EFT? Tapping, Zenobia has, yes, of course. So, alright. So, basically, it's emotional freedom technique, emotional empowerment technique, the tapping technique. These are some amazing techniques for instant release. So, to then become physical. So, the emotional problem is something probably that an inner child is now coming up with, or a particular situation that you are just reacting to. So, say for example, you have issue of stress. There's a deadline, and but it's high pressure. You're crumbling under the deadline. You're terribly stressed, and your heart is palpitating, and you're trying. All your meridians kind of gather here. This is one of the most important. If you take two fingers or just your hand and you start tapping this area, okay, this in the first place and expressing it. So you will say, for example, I still choose to love and accept and heal and integrate that part. I'm terribly upset and that boss of mine is driving me mad, and I hope I can deliver. I'm so scared I won't be able to deliver, but still I choose to heal and integrate that part of me. And even though, and you go on and you keep, whatever thoughts keep coming to your mind as a result of it, and if I fail, I feel that, that number and say, okay, I'm feeling this level of anxiety, stress, anger, whatever. And then you start doing this. You do about 7 times. Place your hands across your thighs, 7 deep breaths. And then ask yourself again, where is the number gone on the scale? Most likely it's probably dropped by half by then. So it's gone from 9 to 4. Or if it's gone from 9 to 6, fine, no problem. Powerful tools that you can use instantly, any point of time, for any situation you're in which involves anxiety, fear, stress, especially. Then it's there. It's there in the technique book. Now there's another thing called tapping. So there's this wonderful tapping technique that is there, which is again extremely effective. Got an armpit. Then you end with the top of the head. Those are the 9 points in this tapping algorithm, and that is 1 round. So what you do is you begin by, I have this problem, so even though I have this anxiety, even though I have this headache, I love and accept myself, or simply, I accept myself. A lot of people feel resistance. By saying the setup statement, it sets us up for the rest of the process, helps neutralize any judgment we have around the problem. So you say the setup statement 3 times, then you tap on the rest of the acupressure points while simply saying how you feel. It's not about the fancy language, it's about being honest with how you're feeling, bringing that up in your body and tapping on that on these acupressure points. Again, sending that calming signal to the brain, letting your brain know that even with this thought, you are safe and it's okay to relax. So let me give you an example of what 1 tapping round may look like. If you are stressed, I accept myself. Whatever variation of the setup statement you'd like to use is perfect. Deadline, side of the eye, I have too much to do. Under the eye, it's too much for one person. Under the nose, all this pressure. It's as simple as trusting your intuition and really just giving a voice to the tape you're already playing in your head. You might already be having that panic conversation. Now have that, you'll get to the point where you can say these things, you can think these thoughts without having the tension, the physical response. And that is where the real change happens. Well, I hope that Okay. ये जो है ये मेरा नया लॉन्च है, मेरा नया अवतार है, जो कि हैप्पी सोल एक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, वर्कशॉप सीरीज़ मैंने लॉन्च किया है. ये एक साइंस है जो स्पिरिचुअलिटी से मिक्स होता है. तो मैरिज जैसे कहती है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मैरिज, वो है हैप्पी सोल, जो कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग परेशानियां हैं, राइट. और परेशानियां हम सब की एक ही है, जैसे कि मैरिज इश्यूज़, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, या तो स्ट्रेस, डेडलाइंस, प्रेशर्स. हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो है यूनिक नहीं है. आपकी स्टोरी, मेरी स्टोरी एक ही स्टोरी है. सिंगल पेरेंटिंग या शादी टूटना वगैरह वगैरह सबकी ज़िंदगी की एक पहलू है. तो
दो जन को एक ही चीज़ हो, एक जन उसमें विक्टर निकलता है और एक विक्टिम निकलता है, एक जो है अपनी ज़िंदगी से कुछ बनाता है और एक जो है अपनी ज़िंदगी डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या है खूबियाँ उस शख्स में जिन्होंने अपने आप का कुछ बनाया, और क्या प्रॉब्लम है उनमें जो ये सारी समस्या के साथ डूब गया? तो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप की अंदरूनी शक्ति जानने के लिए, ये जानने के लिए कि आपको लिमिट क्या करता है, आपकी पोटेंशियल जो है, आपकी जो ताकत जो है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्लस पॉइंट्स जो है, उसको बढ़ा के आगे कैसे ले सकते हैं, हाउ टू टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ। अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि बचपन से आ रहा हो, हाउ टू करेक्ट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें जो है हमने एक साइंटिफिक मैनर में प्रेजेंट किया है, ताकि लोग जो है ज़्यादातर सोचते कि क्या मालूम अगर योगा से सबको ठीक होगा, या इससे ठीक होगा, या उससे ठीक होगा, कौन से मोडालिटीज़ यूज़ करें, क्या हम डॉक्टर के पास जाए, या क्या हम हीलर के पास जाए, या क्या हम ये स्टोन पहनेंगे, एक पुखराज पहनेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, वगैरह वगैरह। तो या तो अगर आप पुखराज पहन रहे हैं तो उसके पीछे एक साइंस है, वो साइंस क्या है। अगर आप एक किनेसियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो उसका साइंस क्या है। अगर वो कहते हैं कि चक्रा है, मेरिडियन है, ऑरा है, तो वो क्या है, उसका साइंस क्या है। क्योंकि अगर हम एक साइंस जानते हैं और हम बिलीव करते हैं कि हाँ ये एक हकीकत है, उसके साथ में हम काम करके अपने आप में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हमारी सोसाइटी में जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस के, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के, डिजीज़ वगैरह वगैरह, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वर्कशॉप है हैप्पी सोल। पूजा जी, जैसा कि आपने भी बताया, और हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, और उनका कहना है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम अपनी दुनिया में खुश हैं। ऐसे लोगों को कुछ आपके इस इनिशिएटिव के जरिए टिप्स देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोग अपनी दुनिया में खुश हैं, और वर्ड है खुश है, तो उनको हैप्पी बनने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्पी है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, अगर आपकी ज़िंदगी में आप फील करते हो कि आप खुश नहीं हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीका से जीना चाहते हो, और आप ये नहीं जानते हो कि हम कैसे जिए एक अलग ज़िंदगी, या आप बदलाव लाना चाहते हो, आपका मैरिज सोचो अगर बिल्कुल डेड मरा हुआ मैरिज है, आप उसी मैरिज को जागृत करना चाहते हो, या आप एक ऐसे मैरिज में हो जो कि आप छोड़ना चाहते हो, या अलग अलग तरीके हैं जो कि आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। तो इस वर्कशॉप में आप ये सीखते हैं कि बेस्ट तरीका क्या है जिसके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी जो है बदल सकती है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, और जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमारे सारे आर पार जितने सारे लोग हैं वो ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। अगर हम अग्रेसिव है और हमेशा हम डांटते रहते हैं, शाउट करते रहते हैं वगैरह वगैरह, हमारा माहौल वो बन जाता है। अगर हमारी वो कहते हैं ना खुशियाँ से खुशियाँ फैलती है, वो सही है। तो अगर मैं आपको एक जोक सुना, मैं एक बैठ के बोले यार मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, और मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, तो चांसेस है कि आप भी मुझे एक जोक सुनाएंगे। अगर मैं बैठ के मेरा दुख दर्द बांटूं कि हाय मेरे लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप भी बोलेंगे यार मेरे साथ भी ये हुआ, ये तो हैप्पीनेस ब्रीड्स हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी ब्रीड्स पॉजिटिविटी। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक फाउंटेन ऑफ पॉजिटिविटी, फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस कैसे बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है हमारी कोर्स आपको सिखाती है। पूजा जी, एक और इसके बाद क्योंकि ये ऐसा टॉपिक ही ऐसा है कि हम यूथ के बारे में अगर बात ना करें तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हम आए दिन सुनते हैं कि यूथ जो इसका डिप्रेस का शिकार होते हैं, और हम आए दिन सुनते हैं कि कोई मॉडल या फिर कोई यूथ या एग्जाम में ये सब यूथ के लिए आप इस इनिशिएटिव के जरिए क्या कुछ मैसेज होगा आपका? ओके, तो एक है कि जैसे कि मैंने कहा हमारे सारे प्रॉब्लम्स एक ही हैं। अगर आप जवान हैं और आप एग्ज़ाम दे रही हैं तो एग्ज़ाम प्रेशर होता है, वही आदमी जो है बड़ा होके जॉब करेगा, फिर जॉब प्रेशर आ जाएंगे। एग्ज़ाम में भी डेडलाइंस है, स्कूल में भी डेडलाइंस है, जॉब प्रेशर में भी डेडलाइंस है। तो डेडलाइंस होते हैं, हम किस तरीके से उनको हैंडल करती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये जल्दी सीखें, सोचो हमारी जवानी में ही सीखें कि हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकें, तो आवर फुल लाइफ इज़ मेड सो मच ईजियर। तो ये कॉर्स जो है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ज़्यादातर इसमें अडल्ट आते हैं। एनीवन आई थिंक अबव द एज ऑफ 20 वुड जनरली कम फॉर दिस कोर्स। लेकिन मैं एक और कोर्स कर रही हूँ जिसका नाम है टीनेज ट्रायम्फ, हैप्पी सोल का ही है, टीनेज ट्रायम्फ, ये वाला है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन। तो टीनेज ट्रायम्फ जो है एज ग्रुप 12 to 20 का है, जो कि उनके सारे प्रॉब्लम्स जो है उनको स्पेसिफिकली टारगेट करती है, वेदर इट्स सुसाइडल बिहेवियर, एडिक्शंस जो होते हैं, गेमिंग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, उनके हार्मोन्स जो चेंज होते रहते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ जो बहुत प्रेवलेंट है, वो सारी चीज़ें हम वो टीनेज ट्रायम्फ कोर्स में उसके बारे में बात करते हैं। मैम, तो ये आपका आगे स्ट्रैटेजी कैसा रहेगी? दिस फॉर द एलीट क्लास, आप No, no. Happiness is for people who are not happy. As simple as that. अगर आप खुश नहीं हो, आप प्लीज आके सीखिए कि आपके अंदर हैप्पीनेस हम कैसे जागृत कर सकते हैं, आप खुद अपने आप में कैसे जागृत कर सकते हैं। दिस कोर्स इज फॉर पीपल हु नीड to be in control of their life, people who need to change their life, people who want to have a difference in their life. This course is for them. मैम, जैसे कि आप कॉलम भी लिखते हैं जी। तो आप हमेशा अपने कॉलम में क्या इस कॉलम में भी इसके बारे में कुछ जानकारी होगी भविष्य में? जी क्या है कि मेरे कॉलम में मैं ज़्यादा रिलेशनशिप एडवाइस देती हूँ, क्योंकि मेरे कॉलम में जो है बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, और हमारी सोसाइटी में सबसे ग्रेट प्रॉब्लम है हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या माँ पेरेंट चाइल्ड के बीच में, या तो बॉस और कोलीग्स के बारे में, या बॉस एंड एम्प्लॉई के रिलेशनशिप्स में। तो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है उसमें हमारी सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो दिस कोर्स स्पेसिफिकली डील्स विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, डील्स विद एनर्जी मेरिडियंस। वो कोर्स, हमारा कॉलम जो है इज स्पेसिफिकली अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। दिस कोर्स जो है ऑफ कोर्स उसको टारगेट करता है, लेकिन इट टारगेट्स इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, जो कि है टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आप में क्या क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है। लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में बार बार मैं वही टाइप अट्रैक्ट करती हूँ। आप ऐसे बार बार वही टाइप के अट्रैक्ट क्यों करते हैं? ये कोर्स आपको वो सिखाता है। आप ये भी सीखते हैं इस कोर्स में कि हम जो सोचते हैं उसकी वजह से हमारी इमोशनल स्टेट बन जाती है, कुछ हो जाता है और आप इमोशनली रिएक्ट करते हो। इमोशनली जब आप रिएक्ट करते हो उसके साथ आपका फिजिकल बॉडी में वो इमोशन चला जाता है, और उसकी वजह से हमारी डिजीजेस जो है पैदा होती है। तो योर माइंड कंट्रोल्स योर इमोशंस, कंट्रोल योर बॉडी। सो वो कनेक्शन जो है जानने के लिए कि अगर हमारी थॉट प्रोसेस ने हमारी डिजीज़ को क्रिएट किया है, तो हमारी थॉट्स बदलने से वो डिजीज़ भी बदल सकती है, रिवर्स हो जा सकती है। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग। ये सारी चीज़ें के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई द कोर्स हैज बीन डिजाइन। मैंने 10 साल से रिसर्च की है, 10 साल से मैं अलग अलग कोर्सेज कर रही हूँ, बुक्स पढ़ी हूँ, कोर्सेज की है, लोगों से मिली हूँ, बहुत सारा रिसर्च किया है, एंड ये कोर्स जो है उसका सम टोटल एक्सपीरियंस है। मैम, जो मतलब आपका ये सेशन अटेंड नहीं कर सकते वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ? मतलब कोई वीडियो आपका यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं, इस वक्त तो वीडियो इस वक्त तो नहीं है यूट्यूब पे। हम एक चैनल सून लॉन्च करने वाले हैं, हैप्पी सोल चैनल, लेकिन वो ऐसा कोर्स का नहीं होगा। कोर्सेज जो है हम करते रहेंगे। जयपुर में मैंने कोर्स किया था फिकी फ्लो के लिए, अभी हम बॉम्बे में लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद हमारे कोर्सेज अक्रॉस इंडिया जाएगी, अक्रॉस बॉम्बे बार होते रहेंगे। तो ऑफकोर्स दिस कोर्स इज समथिंग जो अभी ऑन गोइंग रहेगी। जी, रैप अप करने से पहले आखिरी सवाल, कुछ पूछना? क्या पूछा? सो स्वीट। मैम, जैसे कि सिद्धू जी ने सिल्वर मेडल जीता है जी। ओलंपिक में, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, वेल मैं इतना बोलना चाहती कि व्हाट्सएप पे इतना क्यूट कोट आया था सिंधु जी के बारे में। उन्होंने कहा कि हमेशा स्लोगन रहा है अब तक सेव द गर्ल चाइल्ड, अब स्लोगन है सेव्ड बाय द गर्ल चाइल्ड। तो इंडिया की इज्जत बचा ली, वी हैव बीन सेव्ड बाय द गर्ल चाइल्ड। सो कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स एंड सो प्राउड, थैंक यू फॉर मेकिंग अस सो प्राउड, आवर कंट्री सो प्राउड, थैंक यू। पूजा जी, रैप अप करने से पहले एक आखिरी सवाल कि वो ऐसा कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ही इंस्पायर्ड हैं अपनी लाइफ में, या इन सारी चीज़ों से काफ़ी इंस्पायर्ड आपको एक यू नो इंस्पिरेशन मिलती है उनसे जो कि द वर्स्ट सिचुएशन से गुजर के फिर भी अपने लाइफ में इतने पॉजिटिव रह सकते हैं कि वो दूसरे के लाइफ्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और वो ऐसे एक शख्स है मेरी माँ। मेरी माँ जो है, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक गई, कहाँ से आई है और कहाँ तक गई है अपनी लाइफ स्टोरी में, इट्स मैग्निफिसेंट। तो आई वुड से एक औरत की साहस, हिम्मत, ताकत, पॉजिटिविटी, गुडनेस, काइंडनेस, उन्होंने जो कुछ किया अपने फैमिली के लिए, समाज के लिए, द वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए, एंड फ्रॉम वेयर शी केम फ्रॉम, इतना ट्रॉमा, इतना दुख, इतना दर्द, सब सहकर, सब पार करके जो कुछ उन्होंने किया, शी इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ। और अगर इंटरनेशनली देखूँ तो समबडी लाइक एंजेलिना जोली, यू नो, शी इज़
फैबुलस एंजेलिना जोली। अब काम भी करती है, बच्चों को भी अडॉप्ट करती है, खुद के बच्चे हैं, सोशल सर्विस इतना करती है, शीज एंड अपने आप जिंदगी अपने तौर तरीके से जीती है, एंड शी डज गुड फॉर एवरीबडी, यू नो, शी इज अ फैंटास्टिक रोल मॉडल। Thank you so much. You're welcome. Wish you all the best. Thank you. It's a video? Excuse me, ma'am. My place. Wait, wait. Wait, man, wait, right, man. I'm there. I'm right, ma'am. There. Yeah, I feel very, very happy. I'm anyway a happy soul, and Pooja and me are best friends for the longest time. We're both very happy souls. But I must say कि despite the fact that we are generally हम बहुत happy souls हैं दोनों के दोनों, but यहाँ पर आकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो हम जिसमें हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। जैसे कि हमारे थॉट प्रोसेस जो होते हैं, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, जो ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हमारी सोच, हमारी फिलॉसफी, हम जो किस तरह से लोगों के साथ रिएक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें दे आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। और बड़ी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें कितना इंपॉर्टेंट रखती हैं हमारी लाइफ में, कितना बड़ी हो जाती है बाद में जाके, वो आज सीखने को बहुत माइन्यूटली सीखने को मिला। और छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो उस लिहाज से मेरे लिए इट वॉज अ वेरी ह्यूज आई ओपनिंग डे। इसके अलावा ये इस तरह के इनिशिएटिव कितने ज़रूरी होते हैं जब आजकल की स्ट्रेस लाइफ है काफ़ी, तो कितने ज़रूरी होते हैं इस तरह के इनिशिएटिव? यार मुझे लगता है कि पहले ज़िंदगी में जो सादी ज़िंदगी थी, जहाँ पर हम ज़्यादा गुस्सा नहीं रखते थे, प्रेशर नहीं लेते थे, टेंशन नहीं लेते थे, वो ज़्यादा आसान थी। आजकल की ज़िंदगी जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उस लिहाज से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो ये आपको जो सीखें मिलती हैं, ये आपकी लाइफ वाकई में बदल देती हैं। बिकॉज क्या है कि आप देखेंगे 9 out of 10 पीपल हम अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस पाल के रखते हैं, जैसे गुस्से के, एनवी के, जेलेसी के, स्ट्रेस के। ये सारी जो चीज़ें हैं, दे मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सम काइंड ऑफ डिजीज फॉर्म, मतलब कोई ना कोई तकलीफ आपको इसकी वजह से होती रहती है। तो उस लिहाज से ये हैप्पी सोल जैसे जो एंडेवर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है हमारी ज़िंदगी में। तो any message you want to give to audience? I just want everyone to kind of get, एक बार ज़िंदगी में आप ये तजुर्बा इस तरह का ज़रूर करें, जैसे कि आजकल जो मॉडर्न फिलॉसफी है वो तो सीक्रेट की बात करती है, लुइस हिल की, यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर माइंड। तो आई अर्ज पीपल कि आप ज़िंदगी में एक बार ये विदाउट एनी स्केप्टिसिज्म कि इसमें बिलीफ है या नहीं है, जैसे पूजा ने भी बताया इस पूरे वर्कशॉप के दौरान कि साइंस इज ओनली कैचिंग अप व्हाट वी हैव ऑलवेज नोन। हमारी एक सबसे पुरानी आबादी है हिंदुस्तान की, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास जो हमारी ट्रेजर है, जो हमारी धरोहर है, वो ये नॉलेज है, जिसके साथ साइंस अभी तक मैच नहीं कर पाई है। साइंस को अगले 2 साल लग जाएंगे जब तक वो यहाँ पर पहुँचेगी, बट दिस कैन रियली बेनिफिट यू, इट कैन रियली हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज। तो आई अर्ज यू टू एक्सपीरियंस इट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, टू बी अ हैप्पी सोल। थैंक यू। सदा फ्लाइट है हुआ हैप्पी सोल एक बहुत ही अवेटेड इवेंट है हमारे लिए, बिकॉज पूजा के साथ हम इस बारे में कई बार बात कर चुके थे, एंड आई न्यू दैट इट वाज कमिंग अप, एंड पूजा इज़ द परफेक्ट पर्सन टू कम अप विद दिस, बिकॉज शी इज़ द हैप्पीएस्ट सोल आई हैव मेट इन माई लाइफ. She's always smiling, she's always looking for solutions, never focusing on problems. Problems हैं भी तो उसे overlook कैसे करके better चीज़ें आप ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं. She's all about that. So जो happy souls में वो जो कुछ भी बता रही हैं वो खुद उसे follow करती हैं. They say don't preach what you can't follow, and she is somebody who's exactly following what she's talking about in happy souls. So I think it's a great initiative. बिकॉज हम सब आज की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं और हमें रास्ते नहीं पता होते हैं हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, एंड इतने सिंपल वेज और सिंपल सोल्यूशंस हैं जो शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग अस टू. सो इट्स अ फैंटास्टिक, आई वुड से अ फैंटास्टिक वे एंड अ फैंटास्टिक बिगनिंग, एंड आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट. क्या कुछ नया जानने मिला यहाँ पर? बहुत कुछ नया जानने को मिला है. ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो while talking to Pooja and spending time with her, I have understood
but there are still many more new things and revelations which I got to know today. And I have always been interested in this side of science and understanding and spirituality. So, and I somehow trust Pooja, like aankheं बंद करके. Whatever she tells me, it just makes sense to me somehow. I always call my friend philosopher guide. I always tell her, you're my friend philosopher guide. So when she is telling something, it just becomes more full of sense for me. So I'm really enjoying it and learning a lot. Anything you want to say to audience? Anything? I just want to say that being happy is the most important thing in life, because हम जो कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में खुश रहने के लिए करते हैं, और एक वही खुश रहने के लिए हमें अपने रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं आज, because we just get so busy with our lives and our stress and our problems. So if there are simple ways and there are people coming up with such initiatives to help people to look for happiness, I think they should really look within and be happy. That's what matters. Thank you so much. And I wish all the best to Pooja with many, many, many more workshops of Happy Souls, so that she can spread happiness and make more happy souls. Happy soul. I know, so cute. पीछे पैक कर पाली. Alia, sit. Sorry? Center. You look center. Okay, everyone also do the same. Yeah, very nice. Okay. Okay, look to the right and look to the center. At him. And on the left. Look here. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस सेमिनार में, और आई थिंक दैट पूजा बेदी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज a lot of us forget in our day-to-day struggles and our day-to-day lives and the little tensions that build up, my experience out here at Happy Soul has been amazing, and it is really commendable to Pooja Bedi for organizing such an in-depth analysis, such an in-depth experience for people to understand and learn. Our society today has become, world over, very achievement driven. Like before, you are known by what you have achieved, and if you've not achieved much, then you don't matter anyway in the pecking order of the world. But it's very important to understand that besides loving yourself and acknowledging yourself because of your achievements, you also have to learn to be happy. And being happy is a very integral, and I think the most important part of the human experience, which we completely neglect and we put on the back burner. How to solve relationship issues, how to just learn to be happy for yourself, and therefore, allow others in your life also to embrace that. And I think this course is so beautiful because it's extremely light. It's not something heavy where you've got to learn a million things and transform your life completely. It's just very simple little techniques to help you be better for yourself. And I think this technique would be great to for children who are growing up. I think this technique would be great for companies where you have a lot of employees out there, a lot of day-to-day stress and tension and all of that. It's just great for you at any age point to reconnect with the basics of what you are. And basically, it's listening to your body and understanding who you really are. And I'm loving it. मिनिशा, आप अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए क्या करती है? मतलब मिनिशा लांबा खुद खुश रखने के लिए क्या करती है? To keep happy, I play with my pet a lot. I love my pet, and all my energies and everything come out on my pet. I always surround myself with happy people, and I don't bow down to expectations. कि expectations है किसी के तो आपको ये करना पड़ेगा. I try and remove myself as much as from that. कि मैं अगर expectation है, I may not do it, लेकिन जब दिल से आता है, then I would love to do it. So that's the mantra that I live by. If you feel it, do it genuinely from your heart. There's no life is too short to be
bowing down to people's expectations and doing what others expect of you. You need to do what keeps you happy, and that's when you will generally make others around you happy as well. Minissa, it's been a long time we haven't seen you on screen. Yes, So, yes. Your fans are missing you on screen. Are you all missing me? Yeah. Really? All, yeah. No, only one person said, I don't believe you now. All are missing you, but any upcoming project you want to share with us? Well, there is kind of something in the pipeline, but until it becomes official, I don't want to talk about it. But definitely, yes, I'm going to start working soon, and I'm extremely happy about that. It's on a small screen or big screen? I can't tell you right now. You're being very smart. Okay. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you. Thanks. Shoes and socks. I'm sorry, you get to move up.